भी नहीं। अतिथि। आए हो निभाने जब किरदार ज़मीं पर, आए हो निभाने जब किरदार ज़मीं पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि मिसालें दे ज़माना, कुछ ऐसा कर जाओ कि मिसालें दे ज़माना। जी हाँ, नमस्कार सभी को, मैं अतिथि पांडे आप सभी शिक्षा तरु के इस टीम के साथ आपका स्वागत करती हूँ, सारे दर्शकों का, सारे व्यूअर्स का, सारे स्पेक्टेटर्स का। और जैसा कि पूरे हफ्ता आप लोगों ने इंतज़ार किया और हम संडे को फिर से आए हैं लाइव और बहुत जल्दी हमारे साथ सब लोग जुड़ जाइए। और आज की शख्सियत जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगी, क्योंकि मैं खुद उनसे इतना मोटिवेट हो चुकी हूँ अभी थोड़े टाइम से। तो मुझे लगता है होपफुली आप सब जब कनेक्ट होंगे, जॉइन होंगे और उन्हें सुनेंगे, तो पाएँगे कि बहुत कुछ है जो हमें बहुत कुछ अभी सीखना है और एक ऐसी ज़िंदा-दिल शख्सियत से हम आज मिलने जा रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगी या जुड़ चुकी हैं। लेकिन इसके पहले मैं बुलाना चाहूँगी मेरे को-होस्ट जो कि अशरफ जी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो, स्वागत है आपका। बहुत बहुत वेलकम एक मुलाकात शिक्षा तरु के साथ के सीजन 2 के इस एपिसोड में। आई एम वेरी एक्साइटेड अतिथि बिकॉज आज साई पद्मा दीदी हमारे साथ आ रही हैं और मैं साई पद्मा दीदी के बारे में इफ़ आई वुड लाइक टू शेयर दैट शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया। वो एग्जाम्पल है एक विल पावर की। शी इज़ अ पोलियो सर्वाइवर और 70% डिसेबल थी, लेकिन अपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्टीम से जो है उन्होंने जग जीता है। इनकी कहानियों के बारे में हम जानेंगे आज। और जानने से पहले सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा शाही पद्मा दीदी का, जो हमारे साथ विशाखापट्टनम से जुड़ी हुई हैं। दीदी, यू आर वेलकम मोस्ट मैम, वेलकम वेलकम टू द एंड शो। थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा हुआ आज शिक्षा तरु के विश्व ऑडियंस से मिले हुए एंड आई एम वेरी हम्बल्ड टू नो दिस यंग टीम ऑफ डूअर्स। दीदी, बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू शो यू वन वीडियो। दर्शकों, मैं दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो आपको शाही पद्मा दीदी का, जो बीबीसी ने प्रदर्शित किया है। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शाही पद्मा दीदी का वो वीडियो चलाएं। So I identified myself with them because I am physically disabled, but they are culturally and socially disabled. Initially, our idea is to start for girls, but we couldn't get girls because most of the tribal families and rural families don't give a damn about their children's studies, because the less they study, the more they are into the workforce. It started with 17 boys. Slowly we started gaining the trust of the community with a dedicated team. So I identified myself with them because I am physically disabled, but they are culturally and socially disabled. Initially, our idea is to start for girls, but we couldn't get girls because most of the tribal families and rural families don't give a damn about their children's studies, because the less they study, the more they are into the workforce. It started with 17 boys. Slowly we started gaining the trust of the community with a dedicated team. The word polio has changed my life. I never woke up without pain from my childhood to adulthood. I tried to settle a little bit. I have accepted my disability. My spine surgery again changed my life, and it put me on bed for 2 years. That really put me into the dark corners of depression. Then my father has suggested
That service is health. Why don't you try using your brain power or the power of your communication to help others? That stuck to me like a mantra. I know how much I wanted a biological child, but with this kind of health complications, it is not an advisable thing. On a Mother's Day, all the children made me call and wish Happy Mother's Day. It's the turning table time for me. Looking towards future of my children. I want them to understand their abilities beyond their disabilities. I really want my children to be themselves. I would like to thanks to BBC for this short video on Sai Padma Didi. I would like to add a few more things about Didi. Sai Padma Didi is the founder president of Global Aid NGO started in 2007. She's working for mobility, accessibility, employability, and sustainability of a person with a physical, social, and emotional disabilities. Didi has a vast experience in non-profit organizations focused on health, education, rural, tribal, semi-urban communities. Is a singer, a writer, wheelchair, para-air, rifle shooter, and a strategic fundraiser and a throughout leader. I can say that. So, Didi, I'll add more in a discussion. I would like to know first of all कि please share your life experience अपनी जीवन यात्रा को बताएं हमारे दर्शकों को कि how the ability disability become your ability and how you are doing fantastically great and you are motivating people in the world. Didi, please. Namaste everyone. मैं हर चीज में आई एम फीलिंग इमोशनल टुडे बिकॉज हर चीज में जो जीने की जो क्षमता होती है, जीने की जो पेशेंस होती है, बिकॉज नो वन इज डिसेबल्ड बाय बर्थ. वो सोसाइटी जो है उनको अपाहिज बनाती है. बच्चों को डर का कोई नाम पता नहीं होता when they are growing up, but वो डर सोसाइटी सिखाती है उसको. वो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए करके. So I am a single. ये आवाज जो है, मैं टोटल पोलियो के साथ फर्स्ट 1 year I don't have an voice. So मैं मेरा फेवरेट गाने से मैं शुरू करूंगी. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे. हमको मन की शक्ति देना. दोस्तों, मैं हूँ साई पद्मा. आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के 1 hour के डिस्टेंस में एक गांव है गजपति नगर. वहाँ मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स थे. बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स. देयर्स इज अ लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज. एंड मेरे फादर जो है डॉक्टर मूर्ति एंड डॉक्टर सेशु, माय मदर, both of them wanted to serve the villages. So they have established a clinic there. I am their first born. Actually, it was what happened, ये fortunate कहो और unfortunate कहो, तब WHO का गाइडलाइंस है बच्चों को पैदा होने के 3 महीने के बाद पोलियो का टीका लगाएं. आज आप सुन रहे हैं कि बच्चों को when they born immediately they get the polio vaccination. So we are some unfortunate children of that era who didn't get the polio vaccine within 3 months because तब बहुत ज्यादा बच्चे की डेथ होती थी.
So it started when I am 45 days old, like 1.5 month old. It started with a full fever. By the time they took me from my village to the nearest Visakhapatnam, which has a better facilities, I was completely paralyzed. Completely paralyzed, including voice and all. They don't know the polio as a disease. Also polio is new to them, new to doctors. So what they did is like they did a 52 series of shock treatments. I don't know how or why I survived, but now I know why I have survived. But I don't have any clue how I have survived. My mother used to tell me, my grandmother used to tell me that nurses बहुत रोते थे because when you have to give shock treatments to mobilize the hands and legs of a newborn baby, it's like a 2 months old baby. It is like a painful sight that everyone can't bear it. So वहां से मेरी जिंदगी शुरू हुई. जिंदगी नहीं, जिंदगी से ज्यादा जंग शुरू हुई. वो जंग. सो वो ये बॉडी को ठीक करने में थोड़ा थोड़ा लिम्स को मोबिलाइज करने में. सो बिकॉज ऑफ द शॉक ट्रीटमेंट्स आई गेट माई वॉइस एंड अपर बॉडी फंक्शंस बैक. मैं हैंड्स मूव कर सकती हूँ, वो सब कर सकती हूँ. लेकिन पोलियो दे से इज ए लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी, यानी शरीर के नीचे भाग का डिसेबिलिटी है ये. वो मेरा बोथ माई लेग्स वर पैरालाइज्ड. So then they have, my father and mother have didn't turn a table to get the best possible support, medical support to me. I got operated on me for 18 times, including a total spine reconstruction surgery. जिंदगी देखो मेरी. स्कूलिंग तो स्कूलिंग इज लाइक एकेडमिक ईयर में स्कूल में पढ़ो और छुट्टी आते ही मैं आई यूज्ड टू गो टू हॉस्पिटल फॉर द सर्जरीज. It was in all these things. My grandmother and my mother were like a supporting pillars to me. मेरी अशरफ भाई ने पूछा कि क्या आपको मोटिवेट कैसा आया. सो मैं जिंदगी में मैं जब भी मैं देखती हूँ, पहले मुझे पूछा गया कि गांव में आप जाओ. मैं बिकॉज ग्रामीण इंडिया जो है वो ग्रामीण भारत है. जो आजकल हम लोग 4 और 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो सिटीज में कल्चर कहाँ से आता है? गाँव से आता है. वी ब्रिंग दैट. गाँव में आप जाओ, कोई डिसेबल्ड बच्चों का नाम नहीं होता. वो लंगड़ा, वो अंधा, वो पागल, उसके घर के पास, इसके घर के पास. मोस्ट ऑफ द people forget their names also. That is something that bothered me a lot, because people used to ask me on my face that क्या तुम्हारे मम्मी पापा डिफरेंट जात से शादी किया इसलिए तुम ऐसा पैदा हुई? That was first I came to know about the weight of the caste. कितना भारी होता है वो जीना जो तुमने कंट्रीब्यूट नहीं किया. तो तुमने कुछ नहीं किया, तुमने ऐसा डाका नहीं डाला, चोरी नहीं की, तो कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि जो लोग आपको लेबल करें. लेकिन डिसेबल्ड लोगों के साथ वो लेबल उनके साथ ही पैदा होता है और उनके साथ ही बड़ा होता है. That is something that really bothered me a lot. I always wanted to do something for them, because the childhood का जो impressions जो है, बच्चों का जो impressions जो है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ,
What is normal anyway? Can anyone answer? There is no answer for that. जो आपके साथ नॉर्मल है किसी और के साथ नॉर्मल नहीं है. ये पटना में हिंदी बात करना नॉर्मल है तो another स्टेट में another लैंग्वेज बात करना नॉर्मल है. So when with that, how can you judge a person and label him and crush his entire life? So my thinking was from the beginning to start up something where they are get their respect and inclusion. Because when you ask anyone, why do people want money? Why do people want big career? Why do they want material riches and all? अंदर से आप जांच कर आप पता करो तो they want to belong. They want to get the respect and inclusion. देखो हम भी है इस दुनिया में. हमको इक्वालिटी के साथ हमारे राइट्स के साथ द बेसिक राइट्स के साथ. मैं आपको एक सुनाती हूँ. मेरा फ्रेंड जो है वो आईटी में बहुत काम करता है. वो विजुअली चैलेंज्ड है. सो आईटी में काम करता है और उसका आईटी में हाईएस्ट टैक्स पेयर होने के नाते उसको अवार्ड दे रहा है. और ये जा रहा है रोड पे अपना स्टिक लेते हुए. एक आता है उनको 10 रुपया दान देके चला जाता है. That is the condition of disabled in India. Because disabled यानी the beggars. Disabled यानी उनका कोई दोष के बिना उनका कोई कुछ प्रॉब्लम है. सो ऐसा जानने से disabled to the thought leaders. Now when we talk about our rights, कितना जर्नी रहा होगा, कितनी सेंचुरीज का जर्नी. आजकल हमारा देश जो अब तक नारी को अपना दर्जा नहीं दिया, वो डिसेबल्ड का अपना दर्जा देने में टाइम लगेगा. सो वो मैं दिव्यांग में ये बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ कि ये दिव्यांग. हम लोग दिव्यांग नहीं है. हम लोग हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. हमें थोड़े खामियां हैं बट वी आर पर्सन्स फर्स्ट. दिव्यांग होते तो पूजा करो. दिव्यांग से दिव्यांग का कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या दिव्यांग का? नहीं ना. सो दिव्यांग में हम लोग मिलके हम लोग गवर्नमेंट से भी लिखे हैं. लेकिन what I am trying to say is like it's up to us to feel that inner courage to take the life forward. So at every moment ड्रीम्स करना डिसेबल्ड लोगों के लिए बहुत ही that's what I say. I get many calls. People say that शादी करना अलाउड है क्या? बच्चे होना अलाउड है क्या? ये करियर that is really bothered me to start this global aid exclusively for persons with emotional social. Because Didi, people जो yeah, Didi, रहते हैं. I'm really sorry, I'll interrupt in between. I will surely ask you the question on AID, global AID, right? Because we have a question on this. Aditi has. Friends, I'd like to add one more thing. Aditi, फिर मैं आपकी तरफ आ जाऊँगा because I know that आपके पास बहुत सारे questions हैं पद्मा दीदी के लिए. In spite of multiple disabilities, respected Padma Didi has completed her post-graduation in law, chartered accountancy, MBA, several countries like USA, Australia, Singapore, Macau, and Taiwan. She has gone for the
on number of issues on and she has also worked on non-profit policies, rehabilitation, disability rights and centric conferences. तो मैं आगे बढ़ता हूँ. अतिथि जी, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. प्लीज गो अहेड एंड आस्क विद साई पद्मा दीदी. जी, सबसे पहले तो दी ने बोला कि हम लोग डिसेबल हैं, तो नहीं, आप लोग डिसेबल बिल्कुल नहीं हैं. और डिसेबल को मैं थोड़ा-सा ट्विस्ट कर देती हूँ. यू ऑल आर डिफरेंटली एबल्ड. जो कुछ लीक से हट के काम करते हैं और समाज में अपनी पहचान बनाते हैं. और कुछ लाइनें मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है. तो मैम, ये लाइनें आपके लिए थी. और अगली बार से डिसेबल कोई नहीं कहेगा, ना आप डिसेबल हैं, ना और कोई डिसेबल है. हाँ, हमारी सोसाइटी पे इसको काम करने की ज़रूरत है, बट यू ऑल आर डिफरेंटली एबल्ड, क्योंकि आप लोग हैं इस तरह के, तभी आज हम लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, आप जैसी पर्सनालिटी से बात कर पा रहे हैं. और ये हम सबका बहुत बड़ा गौरव है, ऑनर है कि आप आज हमारे यहाँ बीच में बैठी हुई हैं और हमसे इंटरेक्ट कर रही थोड़ी हैं. सी कुछ चीजें हैं जो सोसाइटी में बदलाव लानी जरूरी है, वो उन पे काम जरूर करना जरूरी है. बट हमको सबको एक साथ आना पड़ेगा उसके लिए, और अपनी थिंकिंग और अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. और मुझे अभी पता चला कि आप पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं लॉ, कॉमर्स और अलग-अलग स्ट्रीम्स में. तो ये बहुत बड़ी बात है, बीइंग अ गर्ल. आपने इतना सब कुछ किया, लेकिन एक और बात है जो शायद अशरफ जी से छूट गई, कि आपने एक कर्नाटिकल म्यूजिक में भी डिप्लोमा किया है. वेरी ना या तो आप एक दीदी सिंगर ने भी हैं. स्टार्टिंग में ही सिंग. ट्रू जी, जी, ट्रू जी. तो ट्रू आप ट्रू. एक थैंक सिंगर यू भी वेरी मच हैं. अतिथि. और हाँ, हाँ. तो आप एक सिंगर हैं, और सिंगर होने के साथ-साथ आप एक पैरा राइफल शूटर भी रह चुकी हैं, और उसके अलावा आप लिखती भी हैं. तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपने अपने आप को कैसे ग्रूम किया? हाउ यू ग्रूम्ड योरसेल्फ फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम, और आज इतनी बड़ी शख्सियत आप कैसे बनी? अदिति एंड दोस्तों, किसी भी ग्रूमिंग और किसी भी तरह का डेवलपमेंट का पहला पड़ाव है एक्सेप्टेंस. जी. Accept yourself as you are, with all your limitations, with all your problems, challenges and all. So इसमें मेरी ग्रैंडमदर की बहुत बड़ा रोल रहा है. वो जी कहती थी नारी का दर्जा क्या है, हाउ शी कैन मेक herself पावरफुल, कैसा करना चाहिए, वाई यू कंप्लेन, बिकॉज whatever you are um, um, whatever you are experiencing in the brain, जो आपके आपके पास है, उनको कदर क्यों नहीं करते. So when the lockdown happens, everybody said that lockdown, everything is stopped and everything. I said to everyone that सदियों से घर से काम कर रहे हैं. We are the first people who are working from home. Yeah. Most of the persons with disabilities are working from home. So most of the people are managing lives in their either within the home or with the chala lot of self-employed works also they are doing. So वहाँ से ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि मेरे साथ चैलेंजेस नहीं है, मेरे साथ ये दुख नहीं है, मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मैं ऐसा करूं कि why I have started this, because I can say that my acceptance in two ways: accepting me as I am, second thing, negotiate that towards the society, not for me but also for others. Because जो हम लोग when you do something for the others, बोलते हैं ना, शक्ति अपनी आप आ जाती है. So in this journey we have touched the lives of 2500 children. 2500 children जिसका डाटा, जिसका इंडिविजुअली वी हैव इम्पैक्टेड इन सम वे और द अदर. ये मेरे अकेले का काम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े हुए, जैसा शिक्षा तरू से इतने लोग जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों को एवरीवन इज गुड.
सबका हृदय में वो मैलिस नहीं रहता, सबका हृदय में दे वांट टू डू समथिंग, दे नो द पावर ऑफ एजुकेशन, बट उनको कोई कहने वाला चाहिए, उनको कोई कहने वाला चाहिए कि ये डायरेक्शन है. So that's why I feel that God has given me this support. When I am completely spine surgery हुआ है मेरा, मेरा एज है then 24 years. I used to at least a little bit walk and all. After that spine surgery, I was on bed for 3 years. Total 3 years at only one side only. I'm not allowed because the total my back is completely sutured and all. So I was completely for one side. So you can understand, दोस्तों, the बहुत difficult चीज है, हेल्प मांगना भी इतना डिफिकल्ट चीज है. हेल्प देना हम दे सकते हैं, लेकिन हेल्प लेना, किसी भी डिपेंडेंट होना, वो इतना कष्ट का काम है. सो दैट is also that only one sentence used to always come to my mind. I'm not this body, I'm not just this body. That is my starting point, where I can understand what everybody is going through. From there, my journey has started. Thank you, Aditi, for asking this question, because that acceptance is what that is lacking in many people. People complain that जो जो चीज वो बदल नहीं सकते, Yeah. वो बदलना चाहते हैं, लेकिन जो चीज उनके पास है उनका कदर नहीं होती है. जो चीज आपके पास जो है, आपके पास दो हैंड्स है, स्पेशली आपके पास जो दिमाग है, you have a pulsating heart. They are the miracles. God has already given that so many miracles to you. Instead of using that, why you always complain what you don't have? Correct, correct. Beautiful, Didi. So Aditi, because there is madam, no word called completion, is everybody is complete in their own way. अदिति जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं लाइव, और उनके बहुत सारे जी मैसेजेस आ गए हैं, और एक लाइव गेस्ट भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में आ चुकी हैं. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जी कि मैं पहले उन लोगों का मैसेज ले लेता हूँ, फिर हम अपने लाइव जी गेस्ट जी को बुला लेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला चलता रहेगा. जी तो दीदी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट यू प्लीज लिसन व्हाट पीपल हैज, आपको उन्होंने गुड विशेस भेजा है, आप फाइनली लास्ट में उनको ग्रीट कर दीजिए. राइट, वी हैव अमित वांगर फ्रॉम दिल्ली, उन्होंने आपको वेलकम किया है. मिस्टर मंजेश कुमार जी हैं, वेरी गुड इवनिंग ऑल मेंबर्स शिक्षा तरु एज वेल गेस्ट. रश्मि अभिषेक करण जी, आपको गुड इवनिंग एवरीवन. मीनाक्षी अली जी अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं, वेलकम टू एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू. मीनाक्षी अली जी वेलकम कर रही हैं. सविता मलिक जी हमारे साथ काठमांडू से जुड़ी हुई हैं, वो हम लोगों को वेलकम, वेरी नाइस वीडियो ऐसा करके लिख रही हैं. हमारे साथ चंदना दत्ता जी जुड़ी हुई हैं, बिहार से, नेशनल अवार्डी टीचर हैं. वाह, बहुत भव्य व्यक्तित्व से साक्षात्कार कराया आपने. प्रवीणा कुमारी जी सहरसा बिहार से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, वेलकम मैम कह रही हैं. सविता रानी मलिक जी, सो इंस्पायरिंग फ्रॉम काठमांडू, वीडियो फॉर अस. आशीष वर्मा जी हमारा वेलकम कर रहे हैं. हमारे साथ कुमारी शिल्पी जी जुड़ी हुई हैं, जो वेलकम मैम कर रही हैं. हमारे मंजेश कुमार जी दोबारा कहते हैं, glorious explanation of the disability, we have to change our thought and set a good mindset regarding. और भी बहुत सारे गेस्ट अभी तक लाइव जुड़े हुए हैं, हम उनके क्वेश्चंस, उनके मैसेजेस को लेंगे दोबारा नेक्स्ट 10-15 मिनट के बाद. अतिथि, हमारे साथ एक लाइव गेस्ट भी जुड़ी हुई है. आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि मैं पहले उनको ले लूं, फिर हम आपके, मुझे पता है जी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास. श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू रिक्वेस्ट टू, हमारे साथ आभा खेत्रपाल मैम जुड़ी हुई हैं. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू आभा खेत्रपाल मैम टू अनम्यूट. हेलो And जी, ये आभा खेत्रपाल मैम is also a disability activist and great personality from Delhi. Number of books written on working on women empowerment, awarded by इनको इन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं. इन्हें ब्रिटेन से
हेनरी विस्कारी अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत वेलकम है मैम, आपने टाइम दिया हमारे इस प्रोग्राम के Thank लिए। आभा you. मैम, वेलकम। वेलकम Thank you. मैम। Thank you. So good to see you, Padma. Always, Yeah, always yeah, useful. it is really a surprise. They kept this surprise purposefully, I guess. Yeah, So I many got a of them, call in the morning. I got a call in the morning that we have to surprise Padma. So you have to be there. So it was so wonderful. Hi, wow, Anand. wow. Anand is also here. Hi, Anand. Hi, Baba. How are you? Oh, I'm good. I'm good. Thanks for the people who are connecting us. True, true, In this true. Uh, way, virtual way. Ava ma'am, thank you very much for coming. I would like to request you, as per the format of our program, I would like to request you to please ask one question with Sai Padma ma'am. What is it that you don't know? Yeah. So मैम, where do व्हाट इज you get हैपनिंग your समटाइम्स strength दैट दो from? फ्रेंड अगर होते भी हैं तो कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं पूछ पाते हैं। दिस इज अ लाइव प्रोग्राम, आई रिक्वेस्ट यू कि ये लाइव प्रोग्राम, अगर दो फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं इस लाइव प्रोग्राम के अंदर। मे बी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एक दूसरे से कभी ना पूछ पाए हो एक दूसरे के साथ। सो दिस इज अ चांस, एक मौका है कि हम एक दूसरे से पूछ पाए। या आभा मैम, प्लीज गो हैंड ओवर टू यू। Padma, where do you get so much strength from? That's the question. You are asking me, I don't know what to Yeah. answer. uh, I don't know. Actually, the strength is that for me, every day is a new day. Every day is a new day. Every pain has to go today or tomorrow. I try to disconnect myself from the pain, whatever that I am going through, the pain of so much things, so many things. Whatever I feel, and I don't plan too much, because basically as a person I don't plan too much, because every day I wake up with the fact that whatever I have done, or whatever I have been that has been given to me, is being like a bonus. So that's why, because otherwise it's not an easy for me to deal with the loss of my mother and recently my brother and lot of Yeah. people I lost in this journey. You know how it is. You have been through that. Just for the day, live for the day, as if basically people say that कोर्ट में बोलते हैं ना, you live as if this is your last day. I try to live and as if this is my last day and enjoy to the best. So True, that true, true. And your strength is also behind you, sitting behind you. yes, yes, yes. My strength is more than me. It's like a pillar that is standing silently with a total acceptance. Even like I was talking Yeah. to Aditi regarding the acceptance. Even there are certain things I may not accept myself. But Anand encourages me to talk about that also. And he accepts that gives me a lot of strength. Dunya jaye to jaye. That we know we are right or whatever we are doing, because you know these NGOs ये सब चलाना, and when you are dealing with multiple stakeholders, ये ये दुनिया, like you know, as a person with disability and a disability leader, you know, in the field, that still world has not really progressed from the woman as a caregiver rather than a caretaker. Yeah. किसी को ऐसा अच्छा नहीं लगता कि ये करें वो करें. My strength comes from Anand in that area, that the compassionate care that he gives, it always motivates me to face another day. Great.
Great. That's great. Ava ma'am, thank you very much. You have given your precious time to Shiksha Taru and two great No, it was personalities my on board pleasure. My together, pleasure. and No, two she has to actually, warrior she has to come and visit us, and she is Yeah, just without visiting, she is just asking questions virtually. and ये तो नहीं चलेगा. this is our format. This is the format of our show, Padma ma'am, Okay, Padma Didi. okay. Ava Didi, Ava ma'am, thank you very much for providing your time, your precious time to Shiksha Taru, and I wish you all the best. Atiti, आपकी आवाज नहीं आ रही है. जी Thank you, Didi. अतिथि, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि हमारे पास एक और गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं, लाइव गेस्ट, एंड आई वुड, मैं जी नहीं चाहता हूँ कि मैं उनको बहुत देर वेट करवाऊँ. जी जी शाही पद्मा दीदी, और मैं आपको एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी से दूसरी ग्रेट पर्सनालिटी से मिलाना चाहता हूँ जो हमारे साथ कश्मीर अनंतनाग से जुड़े हुए हैं. ही इज पद्म श्री जावेद अहमद टॉप. ही इज a disability Wow. activist. I would like to request to के मैं जावेद सर, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम. नमस्ते सर, जावेद स्वागत है टॉप आपका। साहब गुड इवनिंग। वो फेमस गुड सोशल इवनिंग। वर्कर, डिसेबिलिटी जी, एक्टिविस्ट है कैसे मैम, हैं आप? और हमारे हमारे पैट्रॉन भी हैं. थैंक यू वेरी मच सर. आपको जब भी हम अपने शो में बुलाते हैं, जावेद सर तहे दिल से हमारे लिए आते हैं. आपका इस शो में सर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ. थैंक यू, थैंक यू। एज पर द फॉर्मेट, आप तो सर सब मालूम है आपको. थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट. आकृति और अशरफ जी, आपका बहुत अभिनंदन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे गेस्ट से आज हमें रूबरू कराया. साई का जो चेहरा है वो हमेशा खिलता रहता है, हंसती रहती है. तो हमने इनको आज से बहुत सालों पहले फेसबुक पे उसको फॉलो करते थे. इनके बड़े मोटिवेशनल वीडियोस आते थे, हम देख पा रहे थे. और उनकी जब हिस्ट्री पढ़ी जाती है, बायो पढ़ा जाता है, तो खुद ही इंसान को पता चलता है कि कितनी मेहनत इसने की है और कितने जोश से इसने अपनी जिंदगी को जिया. तो अगर डिसेबिलिटी सेक्टर में इन जैसे लोग, आभा क्षेत्रपाल, साई पद्मा, अगर ये लोग नहीं आते तो शायद वुमेन विद डिसेबिलिटीज अभी तक यही सोचती होती कि हमें जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है. तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वुमेन विद डिसेबिलिटीज को इन्होंने इंस्पायर किया है और बहुत सारे इनको अपने रोल मॉडल की हैसियत से देख रहे हैं. और जहाँ तक इन जैसे लोगों का ताल्लुक है, इनकी बहुत ज़रूरत है. ये एज अ टॉर्च बियर्स है, मशाल है हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में. इनको हमेशा नया-नया कुछ लाना चाहिए कि जिससे और डिसेबल वुमेन को ये लगे कि दे आर द प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी. अदरवाइज़ हमें लगता है कि हम पैरासाइट्स हैं, डिसेबिलिटी सेक्टर में शायद हमारा कोई रोल नहीं है ज़िंदगी में, या हम कुछ दे नहीं पाएँगे. जबकि ये देखा गया है कि जब भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है डिसेबिलिटी सेक्टर में लोगों को, तो वो कम से कम 20-30% ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू नॉन डिसेबल पर्सन. लेकिन बदकिस्मती ये है कि अपॉर्चुनिटी कम मिल रही है और लोग ट्रस्ट कम कर रहे हैं. लेकिन जब साई पद्मा जैसी लड़कियां, औरतें बाहर निकलती है, अपने दम पे आगे आ जाती है, तो काफी शो औरों में भी पैदा होता है. तो मैं यही कहूँगा साई जी कि आप अपना जो मार्गदर्शन दे रहे हैं इसको जारी रखिए. और कोशिश और होनी चाहिए, और एक नेटवर्क होना चाहिए वुमेन विद डिसेबिलिटीज का, जिनको आप मोटिवेशन दे, जिनको आप नया रास्ता दिखाए. आनंद जी Yeah, बैठे हैं, तो इनका भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भी एक सपोर्ट दिया आपकी जिंदगी में. तो मैं यही सुनना चाहता हूँ कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज को एक्सेप्टेंस कम होती है टुवर्ड्स मैरिज, बाकी चीज. तो आपने अपनी शादी में कितना वो चैलेंज पाया, और दूसरा ये कि आप अपने आप को और 10 सालों में कहाँ देखना चाहती हो, डिसेबिलिटी सेक्टर को कहाँ दिखाना चाहती हो रास्ता. जावेद जी, आपसे आपसे क्या छुपाना, एंड यू नो एवरीथिंग. यू हैव कश्मीर ऐसी जगह है जो इतना ब्यूटीफुल है, इतना इनएक्सेसिबल है. Beauty and both of the things coexist together, and you are such a fighter. हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं बहुत आपसे. बट
the thing that you said is absolutely right. Women with disabilities is still under the impression that उनका जीने का कोई हक नहीं है, मतलब नहीं है, गांव में रूरल एरिया में जैसे। वैसे आपकी क्वेश्चन का आंसर करते हुए what I want to see in coming 10 years for the disabled sector is like women with disability हो या disabled हो, they should be more open in job creation. The job creation, see, basically I work with a lot of persons with disabilities and communities. दो ही आदमी से और औरत से दो ही रिक्वेस्ट आते हैं. One is career and second is marriage. So career for economic empowerment, marriage for social acceptance and empowerment. So that is something that we want to do is like, for that we are starting a assistive technologies lab जो है वो start कर रहे हैं. So I really want to end उनको disabled को employ करना चाहते हैं हम लोग. We have to see how far it goes. I want many more corporates to come forward and set up small setups in places like villages, in places like semi towns, for where persons with disabilities can go and work. Because ability in disability, जो काम हम लोग करते हैं ना जावेद जी, कोई मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई और नहीं करता. क्योंकि ये करियर एक जॉब को होल्ड करना हमको लाइक एज अ प्राण को होल्ड करना है. Because that gives us the mobility, that gives us the respect that society is needed. So I am really looking forward for men and women. A network is definitely should be for women with disabilities, but for all of them, we need to have a more job creation. Disabled लोगों के लिए बहुत सारे employers की जरूरत है. Corporates को इक्वल रूप से देखकर को एम्प्लॉय करने की जरूरत. That is really I want to look forward to see in the policy changes. Not just inclusion is a practice. Inclusion is an imperative practice, not just one day ka kaam. So that I really want to see. So ब्रेस एड के नाम से हम लोग ने एक नई संस्था शुरू. So it's a company where disabled people will जो है हमारे फीचर्स जो है हम बना सकते हैं, हमारे असिस्टिव डिवाइसेस जो है हम बना सकते हैं. वैसा करने की हम सोच रहे हैं. आगे अभी बेबी स्टेप पे हैं, तो देखते हैं कितना आगे चलेगा. All the best. Thank All you the very much, best. sir. जावेद काश्मीर का ट्रिप तो बाकी है. आपको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आ जाओ. थैंक यू वेरी मच जावेद सर. आप हमेशा अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए देते हैं. आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन साई पद्मा मैम से किया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में वक्त देने के लिए. और आप हम तो हक से आपसे वक्त ले लेते हैं. आप हमारे पेट्रॉन भी हैं. थैंक्स अ लॉट सर. शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. Thank you. Thank you. Thank you so much. जी अतिथि, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड मैं वेलकम करना चाहूँगा आनंद सर का, जो सोलमेट हैं साई पद्मा मैम का. मैं उनको अपने स्टेज से वेलकम करना चाहता हूँ, क्योंकि सर साथ साथ बैठे हैं और मुझे लग रहा है साई पद्मा मैम के लिए जो उनके सोलमेट आनंद सर हैं बहुत बड़ा मोटिवेशन है. फ्रॉम द टीम ऑफ शिक्षा तरू और एंटायर दिस, जो हमारे जितने भी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनकी तरफ से आनंद सर का वेलकम करना चाहूँगा इस शो में. वेलकम आनंद सर. मैं चाहूँगा कि वो भी हमारे साथ साथ आकर के बैठें और हमारी बात सुने. या अतिथि, हमारे साथ एक और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं बहुत दिन से, और
और उनके यहाँ थोड़ा नेटवर्क की भी कनेक्टिविटी का इशू है, एंड मैं चाहूँगा कि उनको भी हम लोग जल्दी से ले लेते हैं, और मैं पूरा प्रोग्राम फिर आपको हैंड ओवर करूँगा। मैंने आज आपको बोलने नहीं दिया है, मुझे माफ़ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, आनंद सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? आनंद सर, इज इट ऑडिबल टू यू? नमस्कार। नमस्कार सर। टीम शिक्षा तरु की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। अतिथि, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, हेलो सर, वेलकम टू द शो। और यू आर अ प्राउड हस्बैंड एंड ऑफ कोर्स मैम इज अ प्राउड वाइफ। तो दोनों की कनेक्टिविटी और दोनों की समझदारी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे बहुत कम पुरुष हैं हमारे समाज में जो अभी भी महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सर, मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ कि मैं ऐसे किसी पर्सन से आज मिल रही हूँ वर्चुअली। और कभी मेरा सौभाग्य हुआ तो मैं आपको उनसे पर्सनली मिलना चाहूंगी, ये मेरा ऑनर होगा। थैंक यू सर, वेलकम टू द शो। वेलकम मैं एक बात आप कहाँ रहते हैं? सर, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, लखनऊ के पास एक छोटा सा जिला है उन्नाव। वाओ। Didi ji, one thing I always say to that, he is the legs that I don't have. जी, Now, over to Anand. कहिए, we hang on to meet all of you in this forum. Shiksha Taru. Shiksha Taru. An inspiring word. मैंने देखा आनंद सर, आप बहुत देर से हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम जल्दी आपको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हमारे जो नेक्स्ट लाइव गेस्ट हैं, जिनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी, साई पद्मा मैम, वो हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट अवार्डी हैं, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है न्यौछावर कर दिया है उन बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए। जस्ट अ मोमेंट, आई वुड लाइक टू वेलकम सुधा पेनुली मैम, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देहरादून से, और जी राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी हैं, और टीजीटी इंग्लिश टीचर हैं, और उत्तराखंड के अंदरूनी पहाड़ियों में आदिवासी बच्चों के एजुकेशन के ऊपर काम कर रही हैं मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधा पेनुली मैम इस प्रोग्राम में, और आपने बहुत शॉर्ट टाइम में हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को, नमस्कार। और कनेक्टिविटी, बारिश हो रही थी सुबह से, अभी थोड़ी देर रुकी है, तो मैं अपने घर की छत पे आके बैठी हूँ, जस्ट बिकॉज आई फाइंड माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मैं इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी से मुझे रूबरू, जैसे ही अफसर जी ने बताया, मैंने कहा आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी एट एनी रेट। मैं यही एक तरह से दर्शन कर रही हूँ आपको, तो ये मोटिवेशनल क्षण है मेरे लिए कि कैसे, मतलब जो लोग शिकायत करते हैं उनसे पूछा जाए। आपके लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगी मैम, अभी जो मुझे तुरंत याद आ रहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ओवर टू अशरफ जी। थैंक यू वेरी मच मैम, एंड एज पर द फॉर्मेट मैं जरूर चाहूंगा कि एक क्वेश्चन जरूर साई पद्मा मैम से पूछें। जी, थोड़ा सा मैं मैम आप बताना चाहूंगी, आपके बारे में तो काफी सुना है। मेरे को भी सौभाग्य मिला है कि मैं ट्राइबल क्षेत्र के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महत्वाकांक्षी योजना है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की। देश भर में प्रेजेंटली 382 स्कूल्स ये रनिंग है, जहाँ जहाँ ट्राइबल डेंसिटी है। तो उत्तराखंड का ये पहला विद्यालय था, 2010 में ये जो है यहाँ पर शुरू किया गया, और मुझे इसका फाउंडर एक टीचर होने का सौभाग्य मिला। तो आई तो मैं यहाँ डेपुटेशन पे शुरू के 3 साल के लिए थी, लेकिन काम करना अच्छा लगा कि बच्चों के पोटेंशियल को देखते हुए, और जब उसके रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद सच में थोड़ा बहुत कुछ हम कर रहे हैं, और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला। और नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं आगे भी इन्हीं बच्चों के लिए काम करूं,
तो बड़ी खुशी होती है इनसे, और Definitely, आपने तो ma'am. बहुत ज्यादा I काम can किया है इनके लिए। I can say the same thing to you. हम लोगों को बच्चे जब आते थे, we used to have जी a sheet called goal sheet. बड़े या होके क्या बनना चाहते हो? पहले जी एक लड़की ने लिखा कि मैं आंगनवाड़ी का आया बनना चाहती हूँ। So ओके everyone is so surprised that क्यों क्यों बेटा आप आंगनवाड़ी का आया क्यों बनना चाहते हैं? सो यू नो कहने की बात हो तो भी कुछ बड़ा बोलते हैं ना बच्चे लोग, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जी टीचर बनना चाहती हूँ. Then when she specifically said that I want to become an आया, when we asked that why क्यों बेटा का क्यों बनना चाहती हो आंगनवाड़ी का आया, she said दो 3 वक्त का खा सकती हूँ ना मैम. So we are working with that kind of communities, you know that, बिल्कुल right? बिल्कुल Tribal, जी and same ladki 7 years under the educational work that we have been doing. Every year we change we give the new goal sheet to them. So she wrote that आई वॉन्ट मैम मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं वो टीवी में कहीं देखा है कि कंप्यूटर का एप्स बनाते हैं वगैरह. जी उसने बोला कि मैं एक ऐसा ऐप बनाना चाहती हूँ कि जब भी औरत पर कोई हाथ उठाए तो पुलिस स्टेशन में सायरन बजना चाहिए. यस So बच्चे का देखिए that कितना is कैसी सोच है। that is something from a 7-year-old, like a 10-year-old, and from या 6 at 6 she wants to become an aya, and at 10 she wants to be something that really या contributing to the problem that she is facing. So that is एग्जैक्टली something is really motivating, ma'am. You might also have seen कितने लोगों को देखा होगा आपने, like I mean. जी even in our school ma'am I would like to add that we say कि as government of India का तो है ही कि quality education मिले, हम लोगों ने और ऐड किया कि with moral values, discipline Yes. और moral values को ऐड किया है, because we think कि we don't believe in producing doctors and engineers. केवल यही Exactly. नहीं, एक we believe in जिम्मेदार नाम. more than that कि the child we have nurtured here, first of all he is supposed to be a good human being, a responsible citizen. If we are successful in doing that, so automatically whatever the child wants to become, Yes. nobody can check him, nobody can stop Very him, true. Very isn't true. it ma'am? Yes. अशोक जी अभी बोल रहे हैं कि Yes, Sudha ma'am. प्रोफेशनलिज्म नहीं है इतना. I said the same thing. Like professionalism is an अलग बात है. Yeah, Humanism is more important than professionalism. exactly. This is the beauty of our program, ma'am. So I would like to thank Sudha Penuli ma'am. On a very short notice, मैंने 2 लोगों के लिए कह Yeah. दिया. इनको तो short notice पे मैंने बोला कि मैम प्लीज you're most welcome, आपको आना ही पड़ेगा. I would like to I add just कि think Sudha I am Penuli. the member of the Shiksha Taru family. Yeah. या मैम विल आपको अब बन जाना चाहिए. आप हमारे जी सलाहकार बन जाएं, हमें आशीर्वाद देती रहें. मैं सलाहकार ये नहीं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा. सदस्य के रूप में हूँ. थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस opportunity and I wish to meet madam sometime in personal with you on behalf of my vidyalaya. I invite you to visit Dehradun anytime, and you are a source of inspiration for millions of people and I am one of them. Thank you so much. Actually, like देहरादून से मैम मेरा थोड़ा आपसी रिश्ता है, यानी Okay, that's very good. 2007 में यूएसए में Okay, मैंने एक प्रोग्राम किया. तब वहाँ फंडरेजिंग का प्रोग्राम है. वहाँ okay, फंडरेजिंग का प्रोग्राम है. वो डोनर्स कुछ दे नहीं रहे, स्लो चल रहा है. सो उसने आनंद ने कहा कि आप थोड़ा कुछ करते हैं कि he said we are auctioning. She is the polio survivor. She lost her voice and she regained her voice. ये उनका सॉन्ग में हम लोग ऑक्शन करेंगे. जितना जितना आए वो देहरादून में करुणाश्रय नाम के एक संस्था है ना देहरादून okay, में. okay. हाँ, फॉर करुणा पोलियो जी करेक्टिव सर्जरी. जी हाँ, वो उसको देने के लिए वो फंडरेजिंग चल रहे हैं. So then, for that Karunashray in Dehradun,
we are able to Okay. collect $49,000 in 7 minutes. Okay. Great. हाँ, We have इतना seen that एक video also. yeah, 10,000 rupees is the पोलियो करेक्टिव सर्जरी के लिए पड़ता है, Hmm. लेकिन डिसेबिलिटी इतना लो प्रायोरिटी आइटम है, कुछ नहीं कर सकते बोलते उसका समझ नहीं है ना, पेरेंट्स को समझ नहीं है, बिल्कुल। they say that इसका कुछ नहीं हो सकता, so they stop that to giving to the child, Okay. which can make a child from disabled to a little bit independent. Thank you, ma'am. You are doing a wonderful job. Thank you once again. थैंक्स Thank अ you. लॉट, थैंक्स अ लॉट सुधा मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई, आपने कीमती समय दिया। मैं थोड़ा ज़रूर ऐड करूंगा कि मैम को 2018 में इनके अमूल्य योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और अभी Wow. इन्होंने बताया कि इनका विजन बच्चों को जो है एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना है, जिसके लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस शो सुधा Thank you. पेटुली मैम, थैंक्स अ लॉट। Thank दोस्तों, हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। अब टाइम नहीं बचा है, मुझे लगता है कि हमें 5 मिनट एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। मैं हैंडिंग ओवर टू अदिति मैम। अदिति, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज के लिए मैं दोबारा आपसे सॉरी बोलता हूँ कि बहुत टाइम मैंने आपका लिया है। प्लीज हैंडिंग ओवर टू यू अदिति। थैंक्स। सॉरी की कोई बात नहीं है, इतना सुनने को मिल रहा है पद्मा मैम से, तो मैं बहुत एनर्जेटिक और बहुत मोटिवेशनल फील कर रही हूँ खुद से। मेरे अंदर बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं और गूज़बम्स भी। ऑलमोस्ट मैम की जर्नी बहुत स्मूथ नहीं रही है, और ये डेफिनेटली इंस्पिरेशनल है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। सबके लिए तो है ही, लेकिन बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। और 2 लाइनें मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि सफलता कभी भी बॉडी, हाइट, लुक्स पर निर्भर नहीं करती है। सफलता कभी भी बॉडी, हाइट, लुक्स पे निर्भर नहीं करती है। ये केवल ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करती है। हम क्या हैं, कैसे हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ये इन पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सामने ये है स्टीफन हॉकिंग्स का, जिन्होंने अपने हमारे वर्ल्ड को कितने कितने थ्योरी दी। स्टीफन हॉकिंग हो गए, इंडिया में सुधा चंद्रन जी हो गई, रविंद्र जैन जो ब्लाइंड सिंगर थे, लिरिसिस्ट थे, और अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। तो ये सब इंस्पिरेशनल है, और ये सभी डिसेबल नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड है। दैट्स व्हाई दे आर देयर, और उनमें से एक आप हैं जिनसे आज हम रूबरू हो रहे हैं। तो ये हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है। और अब क्योंकि टाइम कम बचा है, तो मैं एक लास्ट सवाल यही पूछना चाहूंगी कि आपका जो एनजीओ चलता है ग्लोबल एड, तो उसमें कई बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो डिसेबल होते होंगे, डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो वो तो अभी बहुत छोटे हैं, तो उनके अंदर आप कैसे कल्टीवेट कर रही हैं ये कि वो दे आर नॉट डिसेबल, they can do very much in their different aspects, different fields. So how you are motivating the kids especially who are differently abled? मैं एक सुनाती हूँ, वन ऑफ आवर गर्ल्स, लाइक वो उसका डेली लेबर है, उसका मामा बाप, तो ये भी लेबर के काम पे नहीं है, तो ऊपर चढ़ते वक्त एक्सीडेंटली वो कंक्रीट सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, कैन यू ऐड योर माइक्रोफोन? थोड़ी आवाज वो आ रही है जी। आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्टिंग, लेकिन थोड़ी आवाज आपको भी आ रही है। हेलो, अभी ठीक है? या अभी सही है। सॉरी, एक्चुअली मैं उस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, उसका हेमा नाम है उसका, और वो लेबर है, उनके लेबर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं। ये भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने गई है, वो गमला लेके वो चढ़ रही है, एक्सीडेंटली शी वाज फेल इनटू कंक्रीट मिक्सचर। वो कंक्रीट का मिक्सचर जो है वो उस पर शी फेल इनटू दैट, एंड उसका यहाँ नर्व कट हो गया, एंड so she, one of the hand is completely paralyzed. She used to reside in our hostel. So what happened is, like, continuously she used to listen about me. She used to, whenever she complains something, the team used to say that, why you are complaining, madam to karti hai na. So it's in a playful way, like he's like, then what she said is, like, before the accident she is a
what is javelin throw. She used to do that javelin throw, and uh, she represented state My in God. javelin throw and got third. And with that sports quota, she got admitted into triple IT. ट्रिपल आईटी का एक प्रोग्राम है आंध्र प्रदेश में वो रूरल रूरल छात्र जो है रूरल छात्र का they will take to the basing on the their marks and also this one, and she has finished the triple IT. Another beauty is that ट्रिपल आईटी में जो इतना वो when she is performing well, वो वहाँ के बच्चे जो है वो सारे कुल मिला के they got pulled up and they got pulled some fund and got herself operated for her hand. वो जो hand जो है वो पकड़ नहीं आती थी, अभी after this surgery she is able to do that. Yeah, so that is something that when we stop, we have to work better ourselves and better than before. You know, yesterday better than yesterday. That is something that is where disabled people stop karte hain. That is where I really want to say that hey, this day is bad. You didn't do well. Fine, you are a failure today. Fine, whatever it is. But tomorrow is another day. You may not know what is in store for you tomorrow. Try for it. Definitely, definitely. वही है ना कि there is a saying, turn your pain into the power, or we must embrace pain and burn it as a fuel for our journey. So Exactly. it's And very even the word disability has the yeah, word in ability. You just have to strike off that D and I. yeah, definitely. Yes. There are so much to talk on this matter, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मन करा आपसे और बातें करें, लेकिन we have time issues, and over to the Ashraf ji, as we are. Turn your mic on, sir. या आई गॉट द पॉइंट। एक जरूर मैं बात पूछना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है साईं पद्मा दीदी के दिल के करीब है, कि दूसरों को वाह वाह करना सिखाते हैं और खुद को वाह वाह करना कैसे सिखाएं। ये एक इनसे बातचीत के दौरान ऐसा डिस्कशन मुझे दीदी से पता चला था कि जो है वो दूसरों के लिए तो वाह वाह कर लेते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या कैन वी लर्न दैट अपने लिए वाह वाह करना, क्या अपने लिए खुश होना, अपने को मोटिवेट करना, अपने अंदर झांकना। दीदी ये मैंने आपसे बातचीत करते हुए मैं ये कुछ और निकाला था, तो कैसे आप इस बात को कहना चाहेंगे और कैसे हमारे सोसाइटी को, हमारे यूथ को और जो भी लोग इस प्रोग्राम को बाद में देखेंगे उनको मोटिवेट करना चाहेंगे आप अपने कुछ शब्दों से, कुछ वर्ड से। साई पद्मा दीदी, आपका मोबाइल थोड़ा साइड कर लीजिए ना, आपका सिस्टम, आपके ना फेस पूरा नहीं आ रहा सिस्टम के। Okay. जी Actually, for this, I want to say one example of Surya, the god Surya, who comes on the duty perfectly. He is the first person. उसका charioteer है Anura. Anura is a completely disabled person. उनका दोनों पैर नहीं है. So he is the first person, we can say that Surya is the first employer of a disabled person. So that in पुराण में ऐसा कहता है, अनुरा जो है वो बिना पाँव के पैदा हुए हैं. When why my grandmother used to say that कैसा ये करना, कैसे करियर करना, कैसा वो सब करना, सारे यूनिवर्सिटीज सिखाते हैं, but there is no university that teaches you how to love yourself, how to accept yourself. So मैं सोचती थी इतना मुश्किल है क्या? मुश्किल है। जो सोसाइटी जो आपको बहुत सारे लेबल्स देती है एंड आल्सो बहुत सारे बाहर का काम हो नहीं पाता है, then to really love yourself you need something, that courage to say that
you are on a right track. मैम कही है ना सुधा मैम, like education with moral values. जो moral का हम लोग जो वो धर्म पकड़ के चलते हैं ना, so then we will get that kind of thing. That self love is something that we have to learn. The sooner we learn, the better. That's why दूसरे को वाह वाह कहना तो कहना अच्छा है, कहना भी चाहिए, लेकिन whenever you are failed, whenever you tried but still failed, give a pat on your back. Do something that really makes you happy, so that you can understand that how much you have struggled for that, and also you are also have done something. So that is again finding your own ability in this the total world of disability and all. Because never for the first the rule for that, never compare yourself with others. The second rule of it, accept your limitations. The third one is try one more time. Great. दीदी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, आप आपके कान में आवाज़ आ रही होगी, मैं आनंद सर को भी सिर्फ 1-2 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा उनका, बिकॉज द पिलर ऑफ योर लाइफ, द ट्रू सोलमेट, मैं चाहता हूँ सुने. Anand sir, I would like to request you to share few words of yours, because we are 6 minutes late from our program, and you are a true soulmate of Sai Padma Didi, and you are encouraging, you are आप उनके पैर हैं और आप उनकी जीवन यात्रा में हेल्प कर रहे हैं. मैं आपसे एक 2 मिनट लेना चाहूँगा आपका, कि आप मोटिवेट कर सकें ऐसे यूथ को कि वो आगे बढ़ सकें, और आप कैसे साथ दे रहे हैं दीदी का, और किस तरीके से इनको मोटिवेट कर रहे हैं लाइफ में, और इतना स्ट्रांग बनाया है, क्योंकि अभी अभी इन्होंने शेयर किया कि आपका साथ है तभी तक ये यहाँ तक पहुँच करके आई हैं. आनंद सर, प्लीज share your few words and we will conclude. Yeah, thank you for giving this me opportunity. मैं यही कहना चाहूँगा कि हर आदमी मतलब औरत, एनी लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ये सोचना चाहिए कि ये लेन देन की बात छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए. ये मैं उनको कर रहा हूँ, वो मुझे कर रहे हैं, ये छोड़ देना. हम क्या बनेंगे, लेन देन की बात छोड़ दीजिए, हम क्या बनेंगे, जो अपने निर्भर पर, ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए. क्योंकि हमारी संस्कृति में ये है, दुनिया में कहीं भी नहीं है कि अर्धनारीश्वरी. इसका मतलब है पूरा जो आधा है 50% और दूसरा है 50%. ये नहीं कि एक महिला है तो उनमें मैस्कुलिनिटी नहीं है, मैस्कुलिनिटी भी है. और जब आदमी की बात आती है, उनमें फेमिनिटी भी है. इसीलिए दुनिया चलती है, Great. So nobody is above or nobody is below. कंधे पे कंधे मिला के चलिए, कंधे पे कंधे good मिला के चलिए, और आगे बढ़ना. लेन देन की बात छोड़ दीजिए, बनने की बात सोचिए. This is what. Thank you very much. It's a true inspirational story and great. Thank you very much आनंद सर, आपने अपना टाइम दिया. आप बहुत देर से मैम के पीछे बैठे हुए हैं. मुझे लग रहा है कि कंधे से कंधा मिलाना और साथ देना जो है इसे कहते हैं, बिकॉज मैम सारी बातें सुन रही हैं और आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, यू आर गेटिंग मोटिवेटेड. तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है साथ देने के लिए. आप हमेशा साथ हैं, और मैं भगवान से दुआ करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा
कि आप इसी तरीके से मैम का साथ देते रहे, मैम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और और हजारों आखिरी लाखों जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनकी हेल्प करते रहे। यस सर। और आखिरी बात ये है कि जी महिला जब अपनी कोख को हमें एक घर बना के 9 महीने जब कष्ट लेके वो जो मतलब वी सी दैट women give birth, so every delivery is a new birth to a woman. So women should celebrate those many birthdays. So Wow. I keep telling not only the birthday wishes to the person who was born, but also to their mother. Yes. And वेरी ट्रू, father. Right? वेरी ट्रू सर। थैंक यू So वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर इंसाइटिंग अस। अदिति, हम लोग 10 मिनट आज हमने ज़्यादा टाइम लिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये तो 2-3 घंटे का भी प्रोग्राम रहेगा, तो साई मैम से हमारे क्वेश्चंस अभी भी नहीं पूरे हो सके और एज रेगुलर इतना इंटरेक्टिव सेशन रहता है कि हम अपने जनरल जो है हमारे मैं ये बोलूँगा कि हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं हमारे शो के अंदर, हम उनको बोलते हैं कि आप दोबारा ज़रूर टाइम देना। तो मैं जेन्युइनली फ्रॉम द हाँ, कोर ऑफ हार्ट आई एम हम्बलिंग रिक्वेस्ट साई पद्मा मैम, प्लीज़ आप अपना नेक्स्ट टाइम हमें ज़रूर 1 घंटे का दीजिए, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हाट अतिथि हैज़ वो रह गए सारे पूछने के लिए। हम जो आपकी जर्नी जो है वो सुनते रह गए। इट वाज वेरी इंटरेक्टिंग एंड फैंटास्टिक सेशन। ओवर टू यू अतिथि जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं सर को सुन रही थी, आनंद सर को, और उन्होंने अर्धनारीश्वर वाला टर्म यूज किया। तो वो शंकर जी के लिए यूज होता है, बेसिकली वहीं से आया है अर्धनारीश्वर। शिव और सती जब आधे आधे हुए थे तो शिव जी ने ऐसा रूप लिया था अर्धनारीश्वर का। तो मुझे आप दोनों में वही दिख रहा है स्वरूप, और मैं बहुत ब्लेस्ड सच में फील कर रही हूँ, बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे पर्सन, ऐसे मेल्स बहुत कम देखे हैं जो जेंडर इक्वालिटी और इन सब पे सिर्फ बात ना करें और सिर्फ इस चीज को अप्लाई भी करें, इम्प्लीमेंट भी करें। तो सर से मिलके, सर से थोड़ी सी जो मेरी बातचीत हुई उस पर बहुत मुझे अच्छा लगा। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि बिहाइंड एवरी ग्रेट वाइफ देयर इज एन एनकरेजिंग हस्बैंड, एंड सर इज वन ट्रू, ऑफ देम। तो हैट्स Definitely, ऑफ टू, definitely. थैंक यू वेरी मच, मैं आपको दिल से सलाम कर रही हूँ, थैंक यू हैट्स वेरी ऑफ मच, जी। Thank और you. थैंक मैं यू वेरी मच एवरीवन। Thank you so जाते much to जाते the team and जी every audience listening from everywhere. And you, आशरफ जी ने कहा कि लेजेंड्स से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो दो लेजेंड्स से मिलवाए मुझे, 3 लेजेंड्स से मिलवाए मुझे, जावेद, जी आभा और सुधा मैम। You know, like it is like meeting different souls who beat for the same thing, development of unfortunate and underprivileged people. Thank you so जी much, Aditi. You have been a great host. And Ashraf ji and Ronak Bhai. Ronak Bhai, he was behind me to come to the program. And thank you so much. And thank you so much for making us, it feels like we are coming home, making us part of Shiksha Taru. Thank you so much. थैंक यू। Thank you very much. It is an धन्यवाद। honor to the statement, for the last statement you have told, ma'am. So thanks a lot. This यस is an honor for us, and thanks a lot. हम अतिथि हम बहुत टाइम 10 मिनट आगे जा चुके हैं। सो मैं विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। मैं अशरफ अहमदाबाद से, दोबारा मिलते हैं अगले संडे 4 से 5 के बीच में एक ऐसी शख्सियत के साथ, अपनी इस डायनामिक होस्ट के साथ, अतिथि जी के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ फैंटास्टिक प्रोग्राम आई बिलीव, एंड सभी लोग पसंद करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक शुक्रिया। यू।